Hello everyone, welcome to our channel. So from BEL, which is Maharatna PSU, we have opportunity for BE Tech and diploma candidates for the position of executive trainee and supervisor trainee. They are hiring and salary CTC for executive 12 lakh CTC and for supervisor trainee salary is 7 point CTC. The best part, this year electronics communication guys are eligible for this recruitment and lots of branches are eligible for this recruitment. So if you complete your BE Tech in AC, electronics communication, electronic instrumentation, electrical, electronics, civil, electrical, mechanical, production, and lots of branches are eligible. I will show you later. So now we will start our discussion for this recruitment. So let's start. You see important point. First important point, you should have 65% aggregate in your diploma. Then only you are eligible for this recruitment. And जो BE Tech है उनके लिए परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है, जैसे आपके हाथ में डिग्री होना चाहिए. That's it. Then the next thing is all over India you will get posting, exam center also all over India will be there, so no need to worry for that. सबसे इंपॉर्टेंट जो नोट पॉइंट है वो है बॉन्ड. ठीक है, तो 3 साल का बॉन्ड होगा और जो भी एग्जीक्यूटिव ट्रेनी है, मतलब जिन्होंने भी BE BTech किया है, अगर बिफोर 3 years यू वांट टू लिव BEL देन यू टू पे 5 लाख रुपीज विच इज द बॉन्ड अमाउंट. और जो डिप्लोमा वाले हैं उनको 3 लाख रुपए जो है वो भरने होंगे एज अ बॉन्ड अमाउंट. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है. Then the next thing is process. So process for diploma is CBT plus DV. So this is direct recruitment for diploma candidates. And for BE Tech, it is CBT plus PI. Out of which 75% weightage is given for your CBT and 25% weightage is given for PI. One point, final candidates are eligible for this recruitment. Just the only condition, before 1st June 2025, you should get your result in your hand or interview. मतलब interview पहले हुआ तो आपका result आपके हाथ में चाहिए और result आपका पास चाहिए. ठीक है, इतना ही क्राइटेरिया है. तो डिपेंडिंग ऑन अदर यूनिवर्सिटीज आपको देखना है कि यू आर एलिजिबल और नॉट. कट ऑफ डेट इज 1 February 2025. एज लिमिट इज 27 फॉर जनरल EWS, OBC 30, SSC 32, PWD जो है 37 जनरल, 40 OBC एंड 42 SC ST. The best part is those who completed PG, that is MTech, MBA, so additional 2-year age relaxation you will get. So in general EWS 29, 32, then SSC 34. ठीक है, तो like that you will get additional age relaxation. This will be 1072 rupees for general OBC and EWS, and for SSC PWD 470 rupees. It will start on 1st February 2025 and it will end on 28 February 2025. Tentatively your CBT is scheduled in the month of April 11, 12, 13. Okay, BEL जो tentative देता है वो finally होता है अनलेस एंड अनटिल बहुत कुछ बड़ा हो जाए प्रॉब्लम. ठीक है, बट ये फाइनल रहेगा. तो डेफिनेटली अपने जो स्ट्रैटेजी वीडियो है आई विल सेट एज पर दिस. टू ब्रेक द वैकेंसीज, सो फॉर मैकेनिकल वी हैव टोटल 70 वैकेंसीज, फॉर इलेक्ट्रिकल 25, सिविल 25, इलेक्ट्रॉनिक्स 20, द बेस्ट पार्ट केमिकल 5 एंड मेटलर्जी 5. ठीक है, तो ये तो हो गया for executive trainee for BE BTech. And for diploma candidate we have total 250 vacancy, mechanical 140, very big number, electrical 55, civil 35 and electronics 20 vacancy we have. ठीक है, out of which you can see 7 vacancies are reserved out of 150 and 10 vacancies are reserved for PWD out of 250. Those who complete integrated degree also, be dual degree program also, 5-year integrated also, everyone is eligible. Okay, for BE BTech, for diploma full time regular diploma they want. And for SC ST candidates 60% criteria is there. Okay, so this is the change you can see. Other branches are eligible for this recruitment. So for mechanical, if you complete your BE BTech in this field, in this discipline, then you are eligible for mechanical post. For electrical post अगर आपने BE BTech या diploma power engineering, electrical instrumentation control, high voltage engineering, ठीक है, electrical machines, so you can see here, then you are eligible for this. और मेन इलेक्ट्रिकल के साथ साथ कोई भी आपका अदर ब्रांच है लाइक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आप इलेक्ट्रिकल पोस्ट के लिए एलिजिबल हो. फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, अप्लाई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके, ट्रिपल ई भी इसके लिए एलिजिबल है, लेकिन एक ही फॉर्म आप भर सकते हो. ठीक है, सो दोज हु कंप्लीटेड ग्रेजुएशन इन ट्रिपल ई इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, आइदर यू कैन फिल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एनी अदर ब्रांचेस, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, एवरीवन इज एलिजिबल फॉर दिस रिक्रूटमेंट. सिविल के लिए भी स्ट्रक्चर्स, कंस्ट्रक्शन एंड सिविल अदर ब्रांचेस आर एलिजिबल फॉर दिस. केमिकल के लिए भी यू कैन सी, एंड फॉर मेटलर्जी आल्सो यू कैन सी. ऑन 1st Feb I will upload the form filling video. You can watch that video and according to that you can fill the form. Okay, before that we will start our preparation because last year also I have given selection in BEL and this year also I am ready to give selection in BEL 2025 recruitment. Okay, so strategy video is coming up, so just wait for that. Telegram channel you can join for preparation because in your journey to BEL Telegram channel will play very important role. Okay, कुछ भी query है, कुछ भी doubt है, नीचे मुझे पूछो, then definitely I will ask you in the comment box. All the best.